Friends, my name is Sagar Pandya. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start with a very interesting chapter, one of the most beautiful and one of the most interesting chapter of our syllabus. That is one of my favorite. Chapter number 8, World Wars and India. Let's begin. So dear students, when we are learning about world wars and India, the first thing that we are going to learn, सबसे पहले मैं तुम लोगों को समरी दे दूँ, ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. So we are going to firstly learn about First World War. Now First World War started in the year 1914, ended in the year 1918. We are going to learn about the Second World War, that is the Second World War started in the year 1939, ended in the year 1945, and we are going to learn, as the chapter's name is, World Wars and India. So, as the name says, World Wars and India, we are going to learn about what was the condition of India during the time of World War. So, during the time of First World War as well as during the time of Second World War, India का condition क्या था, that we are going to learn in this particular chapter. Alright, and finally we are going to learn about the impact. So as we all know, अभी मैंने जैसा explain किया था, First World War started in the year 1914, ended in the year 1918. We basically saw there was a gruesome war which came across. The first half of the 20th century witnessed two world wars. Now these were the most important events of the century which witnessed world wars. Of course, that century was really very difficult. It changed the world scenario. We are going to learn about the impact on India. What was the impact on India? So let us begin with the first part, learning about First World War. बच्चा First World War में हुआ क्या था? Basically, let us learn. सबसे पहले we are going to learn about the causes. So, the First World War began in 1914. The main cause of this war was competition amongst the European nation. मतलब European nations के अंदर competition चालू हो गया था, competition for trade, competition for earning money. मतलब industrialization हम लोगों ने देखा था in the previous chapter. वो टाइम पे हम लोगों ने जब industrialization देखा था तो we came across one important factor. Factor क्या था? That is money. अपना सपना, money, रोकड़ा, दमड़ी, cash, वो दे दो सबसे पहले. मतलब सब कंट्रीज का एक एम था. एम क्या था? दैट इज मनी. दैट इज व्हाई हियर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज वर attacking or basically capturing these countries who were filled with raw materials, and India was one of such, who nourished imperialistic ambitions. Imperialistic, we studied about imperialism, dear students. What is imperialism? Domination of an undeveloped nation by a developed nation, by making a colony there, by virtue of establishing a colony there, is called as imperialism. First chapter में पढ़ा था history के. So when we talk about imperialism, when we talk about capturing that particular nation, सबसे पहले this resulted into First World War. So what were the causes of First World War? जिसकी वजह से अरे क्यों हुआ वो? Let us learn. Now, we have already seen that the latter half of the 19th century was marked with several industrial inventions. So, 19th century मतलब हम लोगों ने industrial revolution देखा था. Industrial revolution का year अगर हम लोग mark करें तो to be precise 1750 से लेके 1850 तक time period होता है जहाँ पे industrial revolution आया था. So, if there were great machines which were made, तो वो time पे there were great machines which were made. So, if there were great machines which were made, तो वो time पे new inventions came across. Machines came in use for various productions, that is production processes के लिए, and European countries were now equipped to increase production because of mechanization, because industrial revolution आया, because industries बढ़ने लगा, because mechanization अच्छा होने लगा, they needed more raw materials to match the quantitative increase in production and more market to sell their surplus products as well. मतलब ये हम लोगों ने पहले भी देखा था. मतलब प्रोडक्शन किया उन लोगों ने क्या सोच के किया था कि भाई प्रोडक्शन करना है. अच्छा, प्रोडक्शन करना है तो डिमांड बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो रॉ मटेरियल्स का डिमांड बढ़ेगा, रॉ मटेरियल्स का डिमांड मिलेगा. रॉ मटेरियल्स किधर था? तो यूरोपियन नेशंस ने देखा था टुवर्ड्स द एशियन कंट्रीज, टू बी प्रिसाइज इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट किया, अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया. एंड जब ये कॉन्सेंट्रेट किया, दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस थिंग के ओ मतलब ये इजीली हम लोग अवेलेबल कर सकते हैं. तो रॉ मटेरियल सस्ते में लेके गए, अपने कंट्री से फिनिश प्रोडक्ट्स बना के वापस लेके आए किधर? फॉर सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स. अच्छा, फॉर सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स किधर आए? वापस टू दीज नेशंस. मतलब कॉटन लेके गए इंडिया से, उधर जाके बनाया टी शर्ट, और टी शर्ट बेचने के लिए वापस किधर आए? इंडिया में.
That is, the European nations began to search for newer lands to meet these needs. This often created warlike situations amongst themselves. Because इतना सारा डिमांड था तो यहाँ पे warlike situation create हो गया amongst themselves. क्यों? Because competition बढ़ने लगा, मैं भी इसके ऊपर अटैक करेगा, मेरे को भी ये पर्टिकुलर कंट्री का रॉ मटेरियल चाहिए, दूसरा कंट्री बोलेगा मेरे को भी ये रॉ मटेरियल चाहिए. मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट? नहीं, सबका डिमांड सेम था और सप्लाई देने वाला एक बेचारा नेशन. सो कीपिंग दिस इन व्यू, मोर पावरफुल नेशंस इन यूरोप फेल्ट द नीड ऑफ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द मिलिट्री पावर एंड आर्मरी. द कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, पोर्चुगल, हॉलैंड, Belgium, Holland, that is also called as Netherlands, and Belgium, etc. All these countries came together, had already expanded their empires in Asia and Africa. So Asia and Africa में ये countries already आ गया था. Like when we study about Indian War of Independence, हम लोगों ने देखा था कि एक कंपनी बनाया था. If you all remember, British East India Company. So British East India Company बनाया था, स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया में आना चालू हुआ. मतलब दिस वाज द टाइम जब भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज बनाए गए थे. इन द प्री वर्ल्ड वॉर यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, France and Italy were the nations of primary importance. If these were the nations of primary importance, it was also called as, अच्छा इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं फर-जिया. क्या? फर जिया. साइड पे था फर, दूसरे साइड पे था जिया. एक साइड पे था फर, दैट इज फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया. दूसरे साइड पे था जिया, दैट इज जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया. शॉर्टकट है, याद रहेगा. अमंग देम राइवल ग्रुप्स वर फॉर्म्ड. मतलब एक साइड पे था फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, दूसरे साइड पे था जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया. तो आगे क्या हुआ? लेट अस लर्न. Because of the rivalry, every nation began to enhance its own military and naval strength. There was a competition to produce more and more destructive weapons, and that was one of the main reason which ultimately resulted in political situation which resulted into war, which was closely related to war, that is called as akin to war. So war में हुआ क्या था? Let us learn. The immediate cause of the war. Now the Austrian prince, जहाँ से हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं. So Austrian prince का नाम था Archduke Francis Ferdinand, and his wife were assassinated in Serbia by a Serbian maniac. इसका नाम था Gavrilo Princip. In Austria, people believed this entire act was maneuvered, that is, it was created by the Serbian kingdom. Hence, Austria called a war against Serbia. Russia came to help किसको? Serbia को. So Russia came to help for Serbia. There were two distinct groups of European nations which were formed. One group supporting Austria and another group supporting Serbia. Austria and Hungary were trying to suppress Serbia, and Germany was on their side. Belgium had a neutral policy. So even then Germany attacked Belgium and established their supremacy there. England stood up with Belgium and called a war against Germany. Now Germany, Austria, Turkey, Bulgaria were known as central powers, and दूसरे side पे they were on one side, and England, France and Russia were on the, as allied nations, were on the other side. That is, later on बाद में Italy joined the allied powers in the last stage. तो जैसे मैंने बोला, एक साइड पे था फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, दूसरे साइड पे था जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर. इटली ने साइड चेंज कर दिया एंड दूसरे साइड पे आ गया. सो इन द लास्ट स्टेज ऑफ द वॉर, इटली जॉइंड द allied powers. In the last stage of the war, America joined in with the allied nations as well, and a naval war was fought in 1916 between Germany and England at Jutland in North Sea. And German Navy was defeated. It resulted in the peace treaty in 1918 known as the Treaty of Versailles. Now actually ये peace treaty था, but ये peace treaty खाली नाम के लिए था. नाम के लिए क्यों था? Because बहुत ज़्यादा cruel restrictions लगाए गए थे on Germany. So this peace treaty put an end to First World War. अभी peace treaty तो हो गया. Germany was not satisfied being the losing nation. So Germany
एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, दोनों हार गया। इटली बीइंग द विनिंग नेशन उसको कुछ नहीं मिला, उसको लगा कि उसको कॉलोनीज मिलेगा बट कुछ नहीं मिला। सो हु वन द वॉर? एक साइड पे था फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, और बाद में इटली ज्वाइन हुआ एंड अमेरिका लास्ट स्टेज में आया, दे वन द वॉर। सो जब भी वो लोगों ने वॉर जीता, लेटर ऑन आफ्टर दिस एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर केम अक्रॉस अ नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और बच्चा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना था एट अ वर्ल्ड लेवल, एंड नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। सो देयर वॉज फाउंडेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन. All the nations who were involved in First World War seriously felt that there will be a need to create some solution to avoid any situation that could lead to another world war. So, Woodrow Wilson, the American president, was a peace-loving and idealistic leader. He emphasized, that is, gave importance on the need of having an organization of leading nations, finding peaceful solutions for conflict between the nations and establishing peace in the world. An organization will be formed. मतलब क्या? मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो सॉल्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। यस, करेक्ट। पीस मेंटेन करने के लिए, मतलब वॉर ना हो वो मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। यस, एंड दैट इज वाई एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, विच वॉज established with this objective. Germany, Austria, and other defeated nations were not allowed to become members of this League of Nations. The concept of League of Nations was deliberated by America, and yet it was not to become, I repeat, it was or it did not become a member of League of Nations. Smart move. As a result, England and France retained their dominance in the League of Nations. So England and France का dominance वैसे का वैसा था, which resulted into cruelty into the losing nation. देखा हम लोगों ने, Germany was not allowed, तो cruelty हुआ, cruelty resulted into problems resulted into fights resulted into war, and this time it was not war, it was World War, and this time it was not World War I, but it was World War II. So, Second World War came across in the year 1939. Second World War proved to be more destructive than the First World War. It was certainly more extensive than the First World War, and its warfare was technologically more advanced. Technologically bolo ya kaise bhi bolo, it was more advanced, deaths were more, it was really very pathetic. Causes of Second World War, why did it happen? Let us learn. The League of Nations intended to avoid the conflicts between the nation. Conflicts नहीं चाहिए, जो problems है नहीं चाहिए, but हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लीग ऑफ नेशन में किसको अलाउ नहीं किया था? जर्मनी को। सो यहाँ पे जर्मनी में, अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट जर्मनी में क्रूअल्टी चल रहा था, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, एंड जर्मनी में देयर वाज अ नीड ऑफ पावर ऑफ अ पर्सन हु कुड कंट्रोल द एंटायर कंट्री। एंड अगर कंट्री कंट्रोल करने के लिए एक पर्सन का पावर चाहिए, अ पर्सन, अ सुप्रीम अथॉरिटी, एक पर्सन जो कंट्रोल करेगा, कैन आई से उसको डिक्टेटर बोलते हैं, ऑफ कोर्स। So, the Nazis, under the leadership of the dictator Adolf Hitler, grabbed the power in Germany. Hitler began to escalate Germany's military power so as to avenge the demeaning conditions imposed by Germany by the Treaty of Versailles. मतलब on Germany जो impositions लगाया गया था, restrictions लगाया गया था, end कर दिया। किसने? Nazi controlled Hitler. To be precise, Nazis under the leadership of Hitler. He focused on increasing the strength of military as well as navy. Meanwhile, Soviet Russia, a communist nation, was becoming more powerful. It made the nations like England, France and America वेरी मच अनईजी। क्यों? बिकॉज ये तीनों नेशन, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, कैपिटलिस्ट थे। वो साइड पे सोवियत रशिया क्या था? कम्युनिस्ट था। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट में, मतलब एक सोशलिस्ट नेशन या कम्युनिस्ट नेशन इतना पावरफुल बन रहा है, तो ये लोग तो अनईजी फील करेंगे। अभी इन लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल किसका है? मतलब अभी जो यूरोप में सबसे ज़्यादा
कंट्रोल कर रहा है या एक पर्सन जो कंट्रोल करना चाहता है, दैट इज अडोल्फ हिटलर. यस, तो एक काम करते हैं, अडोल्फ हिटलर को आगे करते हैं. सोवियत रशिया एंड इंपीरियलिस्टिक जर्मनी व्यूड ईच अदर एज आर्क एनिमीज. कीपिंग दिस व्यू इन माइंड, मतलब क्या, मतलब रशिया का दुश्मन जर्मनी. अच्छा, रशिया का दुश्मन जर्मनी एंड ऑल्सो इंग्लैंड एंड फ्रांस का दुश्मन रशिया. तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ कि नहीं? Simple concept. That is why, keeping this view in mind, England and France ignored Germany's advances, thinking that it will keep Soviet Russia's increasing power into under control. In 1938, Hitler won Sudetenland. Now ये एक प्रोविंस था जिसके लिए बहुत सालों से फाइट चल रहा था एंड वो कैप्चर कर लिया. इंग्लैंड एंड फ्रांस डर गया, बोला कि यार ये तो अगर ये कैप्चर कर लिया मतलब आगे जाके पूरा यूरोप कैप्चर कर सकता है ये पर्सन. सो Sudetenland, which was in Czechoslovakia, which was populated in majority by people of German origin, यहाँ पे जैसे ये कैप्चर किया, इंग्लैंड एंड फ्रांस ने बोला इसको हम लोग Sudetenland दे देते हैं वरना ये पूरा यूरोप कैप्चर कर लेगा. नाजी कंट्रोल आने लगा था. हिटलर का तो एक ही ड्रीम था, यूरोप कंट्रोल नहीं बट वर्ल्ड कंट्रोल. सो इन 1939 उसने आव देखा ना ताव, he attacked Poland and this was the beginning of the Second World War. He attacked Poland. Actually Poland was looked upon as a neutral country by all the European nations and हिटलर ने जब ही पोलैंड पे अटैक किया, सिंपल सा बात था, जब ही पोलैंड पे अटैक किया तो सबने बोला अरे न्यूट्रल कंट्री के ऊपर क्यों अटैक करेगा. दैट इज वाई दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीजन. इन स्पाइट ऑफ दिस हिटलर अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड पोलैंड. देयरफॉर इंग्लैंड डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट जर्मनी. Gradually, Germany began to grab their lands and of other European countries also in bits and pieces. It already won Poland at the very beginning and Denmark surrendered to Germany. So did Norway in a very short time because इतना स्ट्राइक कर रहे थे, इतना फास्ट स्ट्राइक कर रहे थे. और ये जो फास्ट स्ट्राइक करते हैं उसके एक टेक्निक को बोलते हैं ब्लिट्सक्रेग. क्या बोलते हैं? ब्लिट्सक्रेग. That is attacking with a lightning speed. So in a short time Germany conquered Holland and Belgium as well and its army marched towards Paris. Paris, capital of France. Oh my god, जो नहीं चाहिए था वही हुआ. Germany conquered France too and in May 1940 it attacked England by assaulting the British platoons present in Dunkirk. England, with great caution, moved out 2.5 lakh soldiers from Dunkirk. इसके ऊपर एक बहुत फेमस मूवी भी बना है डंकर के नाम का. सच्ची में बहुत मूवी मस्त है, देखने लायक है. In the world history, the instance of beating the successful retreat is of great significance. During this period, Winston Churchill had taken over the control of England as a prime minister after Neville Chamberlain resignations from this post. So 1939 में हिटलर ने ये जब ही कैप्चर करना चालू किया, he violated the non-aggression pact which was made with Stalin. Stalin is the controller of Russia, that is Soviet Russia, and attacked Soviet Russia. मतलब वहाँ पे उन लोगों का एक पैक्ट बना था जिसका नाम था नॉन अग्रेशन पैक्ट के बाई 10 ईयर्स तक, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मैं तेरे कंट्री पे अटैक नहीं करेगा, तू मेरे कंट्री पे अटैक मत कर. जर्मनी अडोल्फ हिटलर, रशिया स्टालिन, दोनों को मालूम था ये पैक्ट टूटने वाला है. While the Nazi army was marching towards Stalingrad, Russian army was on the retreat. In the month of November 1943, on reaching Stalingrad, 3 lakh soldiers of unsuspecting Nazi army were caught in the trap set up by Soviet army. Soviet Russia defeated the Germans under the leadership of Marshal Georgy Zhukov. Armies of the Allied nations took over Berlin and Hitler went in underground exile and committed suicide, according to the facts. Before this happened, Mussolini was already defeated. Now, who was Mussolini? The dictator of Italy. So, the Nazi soldiers in North Africa had also surrendered by this time. Japan entered in the war in support of Germany. So, एक साइड पे था जर्मनी का अडोल्फ हिटलर, इटली का बेनिटो मुसोलिनी, जापान एंड वो जापानीज मार्शल टीटो एंड स्पेन का फ्रांसिस्को फ्रैंको, जो स्पेन का बाद में बहुत अर्ली टाइम में था, बाद में ख़त्म हो गया था उसका. बट दीज थ्री
Germany, Italy, and Japan. These three were the main dictator controller, I would rather say, countries who would capture or who had a dream to capture the entire world. Now, Japan was already in support of Germany. In 1941, Japan attacked Pearl Harbor and destroyed the American naval base. That is why this was one of the main reasons this resulted in America declaring a war against Japan. Thus, the war field of Second World War expanded further. Later on, Japan went on capturing the regions of Philippines, Myanmar, Malaya, and Singapore. In addition to that, Japan even marched up to Assam, Arakan, and Imphal, these parts of India and the surrounding borders of India. This drove the British to act against Japan's aggression. When Japan seemed to have been doing ahead undaunted, that is unexpected, with their aggressive policies, America launched aerial attacks into the two cities of Japan, that is Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. 6th of August 1945, 9th of August 1945, Hiroshima and Nagasaki. At last, Japan surrendered. Japan surrendered on 15th of August 1945. This put an end to the Second World War. But sir, इसमें तो हम लोग पढ़ने वाले थे about world wars and India. Yes, so dear students, stay tuned for the next video. We are going to learn about world wars and India in the next video. Till then, take care. Bye bye. Stay home, stay safe. संभाल के रहो. Bye bye.